So this is the first, these are the directions that has been given for the question 1 to 6. Direction says the following items consist of, that is 1 to 6 consist of two statements, one labeled as the assertion and the other as a reason. Okay, there are two statements, one is labeled, one is called assertion and the other is the reason. There are two statements for each question. Like question 1, there will be two statements, one will be labeled as a assertion, like you see the troposphere has the maximum density of air. This is the assertion. Okay, what has been stated? Okay, what has been stated, that is the assertion, and the other as reason means whatever has been stated, the reason for that. Okay, assertion means whatever has been given, जो बताया गया है, that is the assertion. Okay, and the other statement acts as the reason. Okay, that is the reason for that statement. जो स्टेटमेंट आपके पास जो उसमें डिस्क्राइब किया गया है उसके लिए कारण क्या है, उसके लिए वजह क्या है, रीजन क्या है उसके लिए. ठीक है, तो देयर आर टू स्टेटमेंट्स, द वन एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन. यू आर टू एग्जामिन दीज टू स्टेटमेंट्स carefully and select the answers to these items using the code given below. Okay, now this is something that you should consider. There are two statements, one is assertion and reason. Clear हो गया ना? ठीक है, आपको दोनों को पढ़ना है, उनको ध्यान से देखना है, and you have to choose the answer from these options. For question 1 to 6, you have to choose the answer from these options A, B, C, D. Okay, each question has two statements, one is assertion, the other is reason. Okay, so option 1 will be true if both A and R, A means assertion, R means reason. Okay, both A and R true and R is the correct explanation of A, means whatever has been asserted in the assertion, whatever has been stated in the first statement, that is assertion, that is true, along with A, reason is also true. Both are true, but reason describes, reason explains the assertion, that will be the first case, means the reason explains this correctly, the statement correctly. Okay, that will be the first. If both A and R true, R is the correct explanation of A, then you will mark A in your mark sheet. Okay, then B, both A and R true, A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Now there is other possibility that both A and R are true, both are true. कोई शक नहीं है, two statements and these are just statements. Think of these as just statements. Both the statements are true. कोई उसमें हमारे पास परेशानी वाली बात नहीं है. Both are true, but R is not the correct explanation of A, means the second statement that is labeled as reason, that does not explain the statement 1, that is assertion. If both A and R are true but R does not explain A, then you will go for option B. Okay, you will see कैसे यूज करना है. A is true but R is false. इसमें आपके पास पहला सही है, दूसरा गलत है, and then A is false but R is true. So accordingly you will choose the answer. Okay, you will mark this accordingly. Okay, so the first assertion, coming to the first question, the troposphere has the maximum density of air. What you say? क्या कहते हो आप लोग? The troposphere has the maximum density of air. You tell me, Rachi. True. You tell me, Jaslin. True. You Manat. पक्का? नेहा गलत है. आप इस तरह हिला रहे हो, आप मुंडी इस तरह से ला रहे थे, मैंने सोचा क्या बताया यार, नेहा को लग रहा हो गलत है. So this is true. The troposphere, this is absolutely true. Assertion is absolutely true. This statement 1 is this is true. This is true. Okay, this is true. There is no doubt about it. Reason, now look at the reason, the second statement. ठीक है, पहले इनको तो स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करो, then come to the reason. First consider this second statement as just a statement कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है. ठीक है. The compressibility of air allows its weight to exert a downward force on and compress the lower atmosphere. You tell me. The compressibility of air allows its weight to exert a downward force and compress the lower atmosphere. You guys tell me, क्या बोल रहा है ये? Air is compressible. मानते हो इस बात को? Air is compressible. Okay. Air is compressible. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें. You can compress air because there is huge gap between the molecules of air. ठीक है, जो भी gaseous molecules उनके बीच में huge gap है. They are spread randomly in the atmosphere.
तो so these molecules can be compressed. So these molecules can be compressed. Okay, the compressibility of air allows its weight to exert a downward force. Yes, if you are compressing something, अगर आपको मैं नीचे रख लूं कहीं पे और आपके ऊपर मैं वजन चढ़ाता जाऊं तो ऑब्वियसली फोर्स कहां पे लगेगी? डाउनवर्ड लगेगी ना डाउनवर्ड फोर्स. तो दिस डाउनवर्ड फोर्स विल बी बिकॉज ऑफ दिस compressibility of air. This is also true. Air is compressible, and the second thing is downward force will be there. This compressibility of air will exert a downward force. That is also true. पहली चीज, air is compressible है. You should remember air is compressible. Air can be compressed easily. अगर compressible नहीं होती तो अपने सिलेंडर घर पे नहीं लेके आते. ठीक है, वहीं पे बोलो कि जहाँ पे आपका 4 लीटर पानी आना है वहीं पे मुझे 500 लीटर पानी जमा करके दो तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. यू कांट डू दैट बिकॉज वाटर इज नॉट कंप्रेसिबल. ठीक है, और इट इज स्लाइटली कंप्रेसिबल, बट एयर इज कंप्रेसिबल. एयर कैन बी कंप्रेस्ड वेरी ग्रेटली. ओके, सो ऑन कंप्रेसिंग ऑन बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेसिबिलिटी इट exerts a downward force and compress the lower atmosphere. It is trying to compress the lower atmosphere. Okay, it is compressible. ऊपर जैसे जैसे वेट आता जाएगा तो these molecules, जल्दी आ जाना, ठीक है, these molecules will exert a downward force and they will compress the lower air. Compress the lower air. So statement 2 is also correct. This is also true. Second statement is also true, and it explains the statement 1. Okay, yes, it explains the statement 1. It is one of the reasons for the troposphere having the maximum density. Okay, both the statements are true, and the second statement correctly explains the first statement. नेहा खुश हो गई, नेहा का सही है. बाकी मुझे लग गया ना पता, नेहा का सही है. बाकी किसी ने भी मुस्कुराया नहीं क्लास में, आपने भी छोड़ दिया. यूसुफिया, हाँ, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ओके, गलत हो गया ना? यू राकेश, सही हो गया, किया ही नहीं. चलो कोई बात नहीं, बट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द रीजन फॉर द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द ट्रोपोस्फियर. ओके, air is compressible, and because of that compressibility the upper layers, they exert a downward force. They try to suppress the lower air that is present there. Because of that compressibility, as you compress something it becomes more denser. Because in देखो होगा क्या, try to understand this thing. Okay, as you compress something, compression, अगर if something is getting compressed, ठीक है, if you compress something तो volume reduces. volume क्या करेगा? reduce करेगा, ठीक है, and in the same amount of volume there will be more mass per unit volume. Okay, mass is constant, volume is getting reduced, so the ratio, that is density, will go up. Okay, actually on compressing, what is happening? Because of compressibility हो क्या रहा है? Volume is getting reduced. That reduction in volume, mass constant रहेगा. In that particular troposphere, mass की कोई हमें परेशानी नहीं, इस तरह से नहीं देख रहे हम. Actually compression की वजह से there will be, what will happen? There will be reduction in volume. Mean in the lesser volume, more mass will be trapped. There will be more mass. The same mass will take lesser volume, and because of that density will go up. So coming to that question, so these both are true. Okay, you got it. Both are true, and A explains this, so option A. Okay, आगे चलें. कैसे मतलब? ट्रोपोस्फीयर की तो बात हो रही है ना, तो लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फीयर कंसीडर करोगे ना, ठीक है. दिस इज द रीजन. लोअर एटमॉस्फेयर मींस ट्रोपोस्फेयर. ओके, ठीक है. हायर यू गो अप, दैट इज द मिडिल एटमॉस्फेयर, देन हायर एटमॉस्फेयर. ओके, ठीक है. सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू, दैट इज कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट का आंसर है ए, ठीक है. द टेम्परेचर्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर for about 10 km from tropopause remain constant, and above it temperatures actually increase with height through rest of the stratosphere. Okay, if you remember, I have told you in the troposphere, if you remember, I have told you guys
In the troposphere, there are 4 layers of this atmosphere. Okay, this is your troposphere, this is your stratosphere. Okay, this is your mesosphere, and then you have thermosphere, and there are the boundaries that are there. Beyond this thermosphere you have the exosphere, and here you have ionosphere, if you remember. Okay, and in ionosphere we have D, E and F1 and F2 layers. Okay, we have studied these things. Okay, उस पे जाने की जरूरत नहीं है. In the troposphere, as you go up, temperature drops. Temperature क्या करेगा? Drop करेगा. Okay, करेगा. ठीक है. This is the temperature. In stratosphere, temperature again increases. In the mesosphere, temperature again goes down, and thermosphere temperature again increases. Okay, in the stratosphere, in the first 10 kilometers or so, matlab in the lower stratosphere, temperature remains slightly constant. Temperature remains slightly constant above the tropopause. This is a tropopause, this is a stratopause, the mesopause, and in some textbooks there is mention of this thermopause, and in other they don't mention this thermopause. Okay, okay, but for your reference, for your understanding, you can consider there is the thermopause also. Okay, there is slightly this disagreement among the different scientists regarding the thermopause. Some consider there is thermopause, some consider there is no thermopause. There is just outer atmosphere beyond the thermosphere. Matlab thermosphere merges into the outer atmosphere. Okay, okay, thermosphere merges into the exosphere, to be precise. So if you say in the stratosphere there is increase in temperature, there is increase in temperature, and I have told you in this 15 to 30 kilometer or so, ozone is maximum. Ozone is maximum. Okay, ozone is maximum. Okay, and this ozone absorbs UV, and this ozone absorbs UV radiation. Okay, if you remember. So the reason that is there for the increase in temperature in the stratosphere is the absorption of UV rays by the ozone. Okay, I hope you have done this question at least correctly. बाकी का पता नहीं, इसको तो किया होना चाहिए. ठीक है. The temperatures in the lower stratosphere above for about 10 km from tropopause remain constant, and above it temperatures actually increase with height through rest of the stratosphere. ठीक है, देखते हैं अब. And this is true. This is true. There is no doubt about it. Ozone absorbs UV radiations in the stratosphere. Yes, ozone absorbs UV radiations. गलत हो गया है. गलत हो गया पायल. Option A is the right answer. Okay, Rakesh. Ozone absorb करती है. ठीक है. So this is again true. This is again statement. Reason is also true. Both the statements are individually true, and this reason correctly explains the assertion. This reason correctly explains the assertion. So for this also the option A is right. If you go there, you want to see how we are using these things. For both these things, both A and R are true, and R is the correct explanation of yeah, we have done this thing. Okay, okay. Now next thing, that is, these questions are actually conceptual questions. These are not direct questions. To you they might seem they are directly from the notes, but they are not direct questions. Remember this thing, they are based on concepts. If you don't clear your concepts and you don't remember few things, तो questions नहीं कर पाओगे. This is as simple as that. ठीक है. If you solely focus on remembering the things, memorizing the things, that's also harmful for you. And if you solely focus on just clearing the concepts, that is also harmful to you. You have to blend both the things harmoniously. Okay, you have to memorize the thing and you have to understand the things. Memorizing and understanding will go side by side. They should be blended harmoniously. Okay. Okay, so coming to the third question, the thickness of the atmosphere is maximum over the poles. What you guys say? The thickness of the atmosphere is maximum over the poles. No? मैं बताता हूँ क्यों. This is false. This is false. The thickness is maximum over the equator. Okay, whole atmosphere. Jaslyn, मेरे साथ हो. Okay,
हाई, यहाँ पे ध्यान दो, उसको रहने दो, आपको मैंने दे दिया आंसर की, आंसर की ऑलरेडी आपके ग्रुप में पहुंच चुकी है, ठीक है। अगर कोई करेक्शन होगी तो आई विल गो, यू जस्ट राइट इट हियर ऑन योर नोटबुक कि पहले का ए है दूसरे का है, बिकॉज देयर माइट बी सम डिस्क्रिपेंसी इन द आंसर की। क्यों? क्योंकि जब मैंने की है ना तो तब कई बार माइंड काम नहीं कर रहा होता है, सीधी बात है, ठीक है। या मैं किस तरह सोच रहा हूँ, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग ज़्यादा तेज चल रहा है अभी, ठीक है, समझे बात, ठीक है। बट यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, उसमें भी कोई गलती नहीं होगी, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट थिंग। बट यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दो, द थिकनेस, बिकॉज आई एम गिविंग यू समथिंग, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द कंटेंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। अब किताब खोल के नहीं बैठा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि हाउ थिंग्स वर देयर, हाउ वी आर अप्लाइंग थिंग्स हियर, ओके। द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम ओवर द पोल्स, okay, this is false, this is definitely false, because if you remember over the equator, if you remember over the equator you have something like this। अगर आप ट्रोपोस्फेयर को भी देखोगे तो beyond the equator this thing was going down like this, okay, okay। So thickness of the atmosphere will not be maximum over the poles, it will be maximum over the equator, even if you consider this particular diagram, okay। So thickness is going to be more over the equator than over the pole, so maximum thickness will be over the equator, okay, okay। So coming back to that particular thing there, the thickness of the atmosphere is maximum over the poles, this is false, this is false, okay, this is false। Now coming to the second statement, that is high insulation and strong convection currents occur over the equator, high insulation and strong convection currents occur over the equator। You guys tell me if you remember when we discussed the low pressure over the equator, I told you there are strong convection currents, these convection currents mostly result in the 4 o'clock showers over the equatorial region, okay। So this is absolutely correct, that is high insulation and strong convection currents, insulation is also high over the equators, okay, and strong convection currents occur over the equator, this is definitely true, this is definitely true, okay। A is false but B is true। so अगर यहाँ पे मैक्सिमम की जगह मिनिमम होता, क्या होता, मिनिमम होता, then both the statements were true and this was partially this was not absolutely the reason, partially। लेकिन अगर यहाँ पे पोल्स की जगह इक्वेटर होता है, क्या होता, इक्वेटर होता, तो देन बोथ वर, और यहाँ पे क्या होता, मैक्सिमम होता है, फिर यहाँ पे क्या होता आपका, मैक्सिमम होता, और इक्वेटर होता पोल्स की जगह, तो देन दिस बोथ वर ट्रू एंड दिस आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। यहाँ पे क्या होता, द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर, यस, पहला अगर स्टेटमेंट ऐसा होता तो दैट दिस इज डेफिनेटली ट्रू, दिस इज डेफिनेटली ट्रू, एंड हाई इंसुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट्स अकर ओवर द इक्वेटर, अगर ये स्टेटमेंट होती देन बोथ वर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए करेक्टली। बट वी हैव बीन गिवन the thickness of the atmosphere is maximum over the poles, which is wrong itself, okay। So we will not go for this A, neither B is also not right, because A is false, okay, A is true, R is false, this is also not right, so in that case our answer is D, A is false but R is true, okay Sophia, okay। So the answer here is D, okay, okay। किसका सही था, ये आपका सही था राकेश, रची, मैंने ऑप्शन से किया था क्योंकि डी फॉल्स ए था, उसमें ये ऑप्शन था, बाकी सारे ट्रू थे ना। देखो आपको यूज करना आना चाहिए, हमेशा प्रीलिम्स में आपको पता नहीं होता, बट एटलीस्ट एलिमिनेशन लगती है, एलिमिनेशन तब लगती है जब आपको चीज़ें पता हो, एक आधी चीज़ पता हो कि वो गलत है और ऑप्शन में सही बैठ रहा है, कहीं ना कहीं पे सही बैठ रही है वो चीज़, तो ऑप्शंस भी यूटिलाइज करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि ऑप्शंस को केयरफुल लिखना चाहिए, हमेशा ही परफेक्ट नॉलेज से कभी भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता। इसमें आपको अभी खैर यूपीएससी ने एलिमिनेशन वाला खेल खत्म कर दिया है, यूपीएससी ने एलिमिनेशन वाला खेल अब खत्म कर दिया, अब एलिमिनेट नहीं होती चीज़ें वहाँ पे, बट कभी कभी एलिमिनेशन काम कर जाती है, कभी कभी एलिमिनेशन काम कर जाती है। व्हेन यू नो वन थिंग, तो अगर वो कहीं पे करेक्टली फिट बैठ रही है तो बाकी ऑप्शंस में फिट नहीं बैठ रही, तो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन यू कैन एलिमिनेट अदर्स एंड दैट वन दैट यू चोज विल बी योर राइट आंसर, ओके। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट 3 spheres of atmosphere are sometimes collectively known as
होमोस्फेयर, ये तो बोलो यार, बोलो सही है गलत है? रणधीर, गलत है सही है? ट्रू। इफ यू रिमेंबर, जब हमने डिग्री ऑफ मिक्सिंग के बेसिस पे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, आई टोल्ड यू कि अराउंड 80 किलोमीटर अबव द अप टू अराउंड 80 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, that is up to 80 kilometer from the surface of the earth, that particular segment of atmosphere is known as a homosphere. Okay, and if you remember, the mesopause is there at around 80 kilometers, है ना? 80 किलोमीटर के आसपास ही है ना? 50 किलोमीटर तक आपकी स्ट्रेटोपाज आ जाती है, स्ट्रेटोपाज 50 से 80 85 किलोमीटर तक आपका क्या आ जाता है? सोफिया, मेसोपाज आ जाती है। ठीक है, तो मेसोपाज के नीचे मेसोस्फेयर है ना, तो अगर इफ यू जॉइन बोथ दीज कंसेप्ट्स, दैट इज योर डेंस डिग्री ऑफ मिक्सिंग, एंड द सेकंड थिंग वाज कौन सा, उनका जो हाइट है ट्रोपोस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर की, मेसोस्फेयर के जो डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उनकी जो हाइट है, इफ यू जॉइन बोथ दिस कंसेप्ट्स, तो यू विल सी द फर्स्ट थ्री स्फेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर समटाइम्स collectively known as homosphere. Yes, this is true. Yes, this is true. And why we call these as homosphere? Because up to that particular height there is no stratification based on the molecular mass of the gases. Okay, the proportion of the gases in this segment at various the proportion of the gases, that is somehow homogeneous, that is somehow uniform. Okay, because of that reason it is known as a homosphere. So first statement is absolutely true. ठीक है जनाब? And from the surface up through the mesosphere, from the surface, the second statement is reason that has been given here, from the surface up through the mesosphere, the proportion of atmospheric gases is about the same as that at the surface, is same as at that the surface, except for greater concentration of O3 in the stratosphere. Okay, so this is also true. There is slightly more concentration of ozone in the, that is stated here, that is stated here, but along with that thing there is also that there is proportion is uniform. Proportion of different gases in the atmosphere up to mesosphere, up to mesopause is uniform, that is also stated here. So because of this reason they are known as that particular segment up to the mesopause, it is known as homosphere. Okay, Jaslyn? So both are true, and this reason correctly explains the assertion. Okay, density stratification याद है, we have discussed three ways in which we discussed the this structure of atmosphere. First was density stratification, second was your temperature based layering, and the third was degree of mixing. Under density stratification there was the variation in pressure across the altitude of the atmosphere, and in degree of mixing there was homosphere and heterosphere. Okay, and if you remember, then we had this nitrogen, N2, oxygen, helium and hydrogen. This was the something that we have discussed already. So based on that particular thing, and here that reason also states that there is slightly greater concentration of O3 in the stratosphere, so it's absolutely right, but this reason also explains the assertion. So both of them are true, there is nothing wrong in it. Okay, so the answer again is A. Okay, okay, मुस्कुरा रहे हैं काफी लोग है ना? Okay, coming to the next question, that is fifth question. There is temperature inversion in the thermosphere. There is temperature inversion in the thermosphere. The particular layer of atmosphere that has been discussed in this statement is thermosphere, and it is telling you there is temperature inversion in the thermosphere. Correct है या गलत, सही है, wrong है? True है, true है. If you remember, in the mesosphere the temperature again like this. ठीक है, so as you go up in the thermosphere, subsequent lower layers of thermosphere, there will be slightly at lower temperature. Okay, so there is temperature inversion in the thermosphere. This is true, this is true. Okay, this statement one is true, absolutely true. नेहा मुस्कुरा रही है, नेहा के क्वेश्चन सही जा रहे हैं, देखा? The reason is the atmosphere becomes rarer in the thermosphere. Okay, you have been given the reason, that is atmosphere becomes rarer in the thermosphere. What is the reason? Is it first
पहला तो ये फोकस करो, इज इट ट्रू, देखो मेरी तरफ, जैसलीन मेरी तरफ देखो, उसको रहने दो, अभी नोट्स क्लोज कर दो, कोई बात नहीं, मैं जो बता रहा हूं दैट्स आल्सो राइट, ठीक है। अभी यहाँ पे फोकस करो, यू शुड नॉट फोकस ऑन योर कंटेंट घर जाके देखना, आप यहाँ पे फोकस करो, बिकॉज यू कांट यूज कंटेंट इवन इफ दैट थिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू मे नॉट बी एबल टू यूज दैट थिंग, ठीक है, क्योंकि दिस वॉज योर फर्स्ट टेस्ट, तो you may not be able to use that thing even if it is given in your content, because there may be some sort of derivation from the content, तो यहाँ पे फोकस करो। Okay, I have never mentioned the word temperature inversion when we have discussed the thermosphere. कभी यूज किया था मैंने there is temperature inversion? नहीं ना किया था मैंने, तो कहाँ क्या मिलेगा उसमें? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। I have never used this word. Temperature inversion हमने बाद में किया है, but if you know the concept of temperature inversion, then you can apply it here. This is the क्रॉस लिंकेज, इस पर्टिकुलर चीज को कहते हो क्या? क्रॉस लिंकेज, ठीक है। यू शुड बी एबल टू लिंक द डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड, इज इट इज अबाउट द टेम्परेचर बेस्ड लेयरिंग ऑफ द atmosphere, and the second thing that has been introduced here is the temperature inversion. So if you know what is temperature inversion, and if you know this particular diagram, this beautiful diagram that is given in your NCERT, मैंने डिस्कस नहीं की है, क्योंकि it is there and I have told you this thing goes like this. नहीं है आपके इसमें नहीं है क्या? ऐसे ऐसे करके है ना, सांप जैसा बना हुआ है ना। तो इफ यू फोकस ऑन दैट थिंग, तो व्हाट डज दैट थिंग सेट कि द टेम्परेचर एट दिस लेयर इन द थर्मोस्फेयर, देखो इधर, द टेम्परेचर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द थर्मोस्फेयर इज स्लाइटली लोअर देन दिस पॉइंट, एट टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज स्लाइटली लोअर देन दिस पॉइंट, एंड द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज स्लाइटली लोअर देन दिस पॉइंट. This particular phenomena, the increase in temperature as we go up through the atmosphere is temperature inversion. Is temperature inversion means there is a warmer layer above the colder layer. Okay, so it is absolutely correct. It is absolutely correct. Yes, there is temperature inversion in the stratosphere. Okay, in the thermosphere. And the second statement that is given here is the temperature, the atmosphere becomes rarer in the thermosphere. Yes, it is also true. It is also true. As you go up, the temperature atmosphere is also atmosphere is getting this rarer. Rarer means less denser. That rarer. The gaseous molecules are spread further apart. Okay, they are very apart from each other. They are at very large distances from each other. The atmosphere becomes rarer in the thermosphere. Yes, it is also true. And then whether this rarefication of atmosphere explains this thing, is it right, or whether assertion explains, whether reason explains the assertion? Does reason explains the assertion? Yes. This is partially, this is one of the reasons that is responsible for this temperature inversion in the thermosphere. Okay, so both are true, and this is the correct explanation of this your first statement, that is assertion. Reason explains assertion correctly. Reason explains assertion correctly. Okay, because they are rarer, so they have more opportunity to absorb the solar radiation. Okay, because they are rarer, the molecules that are there, they have more opportunity to absorb the solar radiation individually. Because of that absorption in solar radiation, they gain kinetic energy, and that kinetic energy contributes to the temperature that is there. Okay, so there is temperature inversion and it becomes rarer, and so this explains this assertion correctly. So both are true. Both are true. Okay, किस किस का सही था ये? 3 लोगों का सही है. राकेश याद नहीं है सर. राकेश, इस तरह का काम चलेगा ना? आई विल सजेस्ट यू टू ड्रॉप दिस प्रिपरेशन एंड गो टू योर होम. नो, डोंट टेक स्ट्रेस. यू आर टेकिंग स्ट्रेस एंड दिस स्ट्रेस इज वेरी हार्मफुल. अगर आपका इस टाइम पे ये हाल है ना, तो यू विल नेवर बी एबल टू एक्सेल इन एग्जाम्स. आई एम टेलिंग यू. नहीं, देखो, अगर स्ट्रेस में हो, ठीक है, इफ एनीबॉडी इज फेसिंग स्ट्रेस इन द क्लास टेस्ट, आई विल सजेस्ट यू to drop your stress, to keep your stress at your home, okay, and come here you stress free. ठीक है, remove everything from your mind, whatever is going on in your these neurons in the mind, drop that at home. ठीक है, जितना भी मैटर आपका है, डार्क मैटर जो भी है, आपके ग्रे मैटर जो भी ऊपर दिमाग में भरा हुआ है, वो उसको खाली करके मेरे पास आओ. ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि ऐसे ही हंसते खेलते एग्जाम में बैठो. स्ट्रेस लेके बैठोगे ना बेटा, ये बहुत बुरी चीज होती है. यू नेवर नो कि आपने अच्छा किया पेपर या बुरा किया, वो किसी को पता नहीं होता.
जो सिलेक्ट होकर टॉप करके भी आते हैं ना लास्ट में, फिर वो जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है ना, बोलते हैं नहीं मुझे पहले से पता था मैंने टॉप करना है। ओ बेटा तुझे पता होता ना तो तू बहुत कुछ पहले से कर लेता, तुझे नहीं पता था कि तूने टॉप करना है। नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, और ये चीज़ मान के चलो कि प्रीलिम्स जितना डाइसी कुछ नहीं है, अनसर्टेन कुछ नहीं है, ये चीज़ आप मान के चलो। प्रीलिम जितना अनसर्टेन है उतना मेंस अनसर्टेन नहीं है, ये चीज़ आप मान के चलो। और वो चीज़ घर पे छोड़ देना, स्ट्रेस लेके जिस एग्जाम हॉल में जाओगे उस दिन तुम खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 6, असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन पता चल गया कैसे ही काम करना है इस पे। वाटर वेपर इज लार्जली लिमिटेड टू द लोअर एटमॉस्फेयर, इज इट ट्रू और फॉल्स? True. Yes. In the lower atmosphere, in the troposphere, it is largely limited to the lower atmosphere. It is talking about the troposphere as a whole. So yes, water vapor is largely limited to the lower altitudes. At the higher altitudes, water vapor gets converted into water droplets. Water vapor or water droplet both are different things. Yes, in the gaseous form, water vapor is largely limited to the lower atmosphere. Yes, true. कोई बात नहीं इसमें, या समझ गए आप लोग? इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। वाटर वेपर कंडेंसेस टू द लिक्विड वाटर इन द कूलर हायर अल्टीट्यूड कंडीशंस। यस, दिस इज आल्सो ट्रू एंड इट करेक्टली एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। इट करेक्टली एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वाटर वेपर इन द, क्या पायल समझ आया? सो यस, बोथ आर ट्रू एंड दिस रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द assertion. So again for this 6 question, question 6, the answer is ऑप्शन ए। दोनों ट्रू है मतलब? हाँ, लेकिन ऑप्शन आपने क्या चूज किया बेटा? मार्क्स उसके हैं, वो लिखा तो है यहाँ पे आपने, फिर वही अगर आपको पता था कि दोनों सही है तो अगर इफ इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग तो आपने ये आंसर करना था ना। ठीक है, इसमें दोनों सही है, देखो यहां तक दोनों सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। गेम तो उसके बाद बिगड़ती है ना, यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, समझे? सो फॉर 6 द ऑप्शन इज ए। ओके ओके, बोलो यार, घबरा गए हो? घबरा गए हो? Okay, now this is the statement based question. It is again statement. You have been given multiple statements. Okay, you have to examine the individual statements. You have to examine the individual statement. There is no assertion, there is no reasoning. This is just these are just individual statement that has been given. You have then you have to focus upon which of the statements given above is are correct. यार ये 6 पे क्यों आ गया? ये 6 ले गया इसको। दिस इज नॉट 6 हियर, देयर आर 5 स्टेटमेंट्स, ये गलत हो गया। ठीक है, सो देयर इज, दिस इज नॉट व्हिच, दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। नहीं ऐसा मत बोलो यार राकेश। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक और चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट मुझे यहाँ पे दिख गया ना। Meridians, okay, meridians are perpendicular to the equator and every other parallel of latitude. बताओ, what are meridians? What are we talking about? We are talking about longitudes. If you remember in the longitudes, I have mentioned one thing, that is each longitude is perpendicular to equator. Yes, okay. Meridians are perpendicular to equator and every other parallel of latitude. Yes, this is absolutely true. This is absolutely true. It is correct. It is correct. Okay, ये याद रखने वाली स्टेटमेंट है, इसमें आपको याद रखना है। Meridians of longitude are parallel to each other. Is it right or wrong? True है? पता नहीं, नहीं किया, क्यों नहीं किया? लेकिन यहां पूछ रहा हूं, यहां तो बताओ। क्वेश्चन नहीं किया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। Meridians of longitude are parallel to each other. False. ऐसे होती हैं, ऐसे 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 ऊपर जाके पोल पे सब एक जगह मिल रही है। द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट इज 180 डिग्री। यहां से एक्सटेंड करके ईस्ट 180 डिग्री, वहां से एक्सटेंड करके ईस्ट वेस्ट 180 डिग्री। दिस इज अगेन ट्रू, दिस इज अगेन ट्रू। ओके,
मेरा पास करने वाला The one, the 180 degree east oblique west longitude roughly coincides with the 180 degree east oblique west longitude roughly coincides with the international date line. Yes, true. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. Because 180 degree, because सुनो यार, आपने बोला था इतनी गलतियां कर सकते हो, इतनी करना ओके, नो नो, अभी एक और है ना यार. ओके ओके, सुनो यार, सुनो, देखना आपको बोलना शुरू हो गया. नो लिसन, देखो एक चीज यहाँ पे मान, ये चीज समझो कि द 180 डिग्री ईस्ट एंड द 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड दे आर वन एंड द सेम लॉन्गिट्यूड, अलग अलग नहीं है. रिमेंबर दिस थिंग, अलग अलग लॉन्गिट्यूड नहीं है. 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट दे आर द सेम लॉन्गिट्यूड्स. ओके, ये गलती नहीं करना कि अलग अलग है, नहीं, दो दे आर द वन एंड द सेम लॉन्गिट्यूड. क्या मनत, 180 degree east and 180 degree west, they are the one and the same, and yes, they roughly coincide, not exactly, but they roughly coincide with the international date line. Okay, this is the क्या. हाँ सर, ये रखने तो बड़ा yes, roughly coincides. मैंने ये और exact wording मैंने आपको क्लास में लिखवाई भी है कि they roughly coincide with the international date line. Yes, roughly, not exactly, because at certain places there is, okay, there is zigzag. The international date line is zigzag. 180 degree east oblique west is not zigzag. Okay, ठीक है. The distance between the two longitudes is maximum at the poles. This is false because at the poles it is 0. ठीक है. That's why you have to focus upon each of the statements. और उसके बाद फोकस करने के बाद यहाँ पे is or correct की जगह not भी हो सकता है, is or नॉट करेक्ट भी हो सकता है, एक जगह होगा भी वो. ठीक है, तो दैट्स वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, 1 भी सब में है. इसमें मेरे से गलती हो गई ये कि ऑप्शन मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं की है. इसमें मेरे से गलती हो गई क्योंकि मैंने ऑप्शंस को वो नहीं किया, मिक्सअप नहीं किया. ये थोड़ी गलती हो गई, अगली बार ये नहीं होगा. ओके जैस्मिन, समझ आया. ओके, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज फॉल्स. तो दो वाला जिसमें है तो ये तो फॉल्स हो गया आपका, ये तो फॉल्स हो गया. ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या बचा, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट इज इन, नहीं है, इज ये इज 180 डिग्री. दिस इज ट्रू. दिस 3 इज आल्सो एवरीवेयर. तो लेकिन अभी पहला और तीसरा का टिक नहीं कर लेना गलती से, क्यों, क्योंकि अभी नहीं पता, अभी चौथे पे जाके देखते हैं. तो चौथे पे 180 डिग्री ईस्ट ओब्लिक वेस्ट लॉन्गिट्यूड रफली कोइंसाइड्स विद द इंटरनेशनल डेट लाइन. यस, ओके, सो द आंसर इज B. 1, 3 and 4. These are Rachi, Randir. ध्यान दो. Okay, so the option is B. The option is B. Okay, चलें आगे. Coming to the next question, that is question 8. Okay, question 8. This is your, which one of the following countries of Southwest Asia does not open out to Mediterranean Sea? What is the answer? बोला है, पढ़ो इसके बारे में. The answer is Jordan. The answer is Jordan. Each of them shares border with Mediterranean Sea except Jordan. Syria, Lebanon, Israel. They all share border with the Mediterranean Sea. राकेश, पायल, इधर दो, इधर मैं ज्यादा तेज हूं आप लोगों से. यहाँ पे ध्यान दो. अगर आपको आ रहा होता ना, आप मेरी जगह यहाँ पे होते, मैं पीछे बैठा होता. ठीक है. Which one of the following countries of Southwest Asia does not open out to Mediterranean Sea? Yes, this is Jordan. इसमें कोई सोचने वाला था ही नहीं, एलिमिनेशन लगनी थी, कुछ नहीं लगना था, सीधा आंसर था जॉर्डन. आंसर बी. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. नाउ लिसन, व्हाट इज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन? ओके, इट इज अ लाइन एज viewed from space which separates the illuminated and dark halves of earth. Yes, the first statement is true. It is the definition of the circle of illumination. Circle of illumination की definition है ये. ठीक है, what is definition? Definition, it is a line as viewed from space which separates the illuminated and dark halves of earth. Yes, it is absolutely true. This is just the definition of circle of illumination. And if you see, देखो इधर मेरी तरफ यार, if you see, this is the earth and this is the sun. From sun, these are the sun rays. ठीक है, and this particular hall of earth will be illuminated at a given moment. Okay,
So this line is the circle of illumination. I have also told you it divides the earth into eastern and western hemisphere, and yes, it separates the illuminated and dark house of the earth. This is absolutely true. Okay. The next statement that is given here, the next statement regarding the circle of illumination is it is constantly changing position across earth's surface. Yes. It is not fixed like equator, it is not fixed like tropic of Cancer, it is not fixed like 180-degree east or west longitude. It is constantly changing because it is a line. देखो from space, ध्यान देना, बातें करोगे मैं डिस्कशन बंद कर दूंगा. उधर आंसर की मैंने दे दी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है. उधर राकेश मेरे साथ बात करो, उधर जाके बैठो. ठीक है, मेरे साथ बात करो. आप तब बोलते हो कि तुम डिप्रेशन में चल रहे हो. नहीं, मैं जब पूछूंगा तब बोलना, ऐसे नहीं. मैं जब पूछूंगा तब बोलना है. जब मैं पूछूं कि कुछ इस बात का जवाब दो. नो लिसन, दिस इज द इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन पोजीशन अक्रॉस अर्थ सरफेस. कोई बात नहीं करेगा. अगर बात की किसी ने एनओसी को पूछूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल मेरी तरह बताना फिर क्या दिक्कत है सर, क्यों आंसर ऐसा दिया आपने. यस, सो इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम एज द अर्थ रोटेट्स, ओके, एज द अर्थ रोटेट्स ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, दिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विल कीप चेंजिंग. अभी यहाँ पे दिन है, अभी बाद में दिन यहाँ से हट के यहाँ पे रात हो जाएगी, किसी और जगह दिन हो जाएगा. तो बेस्ड ऑन दैट थिंग इट विल बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स पोजीशन. इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पोजीशन. यस, बोथ आर ट्रू. This is totally based on concept. So please remember this thing. It is constantly changing. Yes, it is constantly changing. ठीक है. Okay. Now coming to the next question. That is consider the following pairs. The first that is plane of ecliptic. The plane on which Earth revolves around the sun. Okay, this is matched to this. Second is northern summer solstice. The specific date on which southern hemisphere is pointed maximally towards the sun. Yes, पहले वाला देखो, plane of ecliptic. Yes, plane of ecliptic is that particular plane on which Earth revolves around the sun. It is absolutely true. This is true. Okay. Northern summer solstice. The specific date on which southern hemisphere is pointed maximally towards the sun. Northern summer solstice की बात हो रही है. Northern summer solstice पे the northern hemisphere is maximally tilted towards the sun. Okay, so it is wrong. ठीक है. कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे नहीं करनी है गलती, अब यहाँ पे होगी. Axial tilt. The 23.5 degree tilt of the equator from the plane of the ecliptic. सही है गलत है? गलत. Axial tilt is the tilt of the axis. Okay, this is wrong. Axial parallelism. The 23.5 degree axial tilt of Earth always remain the same in its revolution around the sun. Yes, this is true. So first and fourth option E. तो वही तो नहीं गलती करनी बेटा, ऐसी गलती होती है एग्जाम में, तभी तो वो आपने नहीं ना पढ़ना है, आपने नहीं पढ़ना है. 0.67 1/3 2 मार्क का क्वेश्चन. कहाँ हो? क्यों होगा 25? 1/3 है बेटा, 1/3 है. 1/3 by 2 करो ना यार, 0.67 आता है. ठीक है. नहीं, यूपीएससी में नहीं होता, यूपीएससी में 1/3 होता है. क्लास टेस्ट को छोड़ो यार, क्लास टेस्ट में कुछ नहीं हो. क्लास टेस्ट मीन्स नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव है. इज द, देख लो, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, पूछना है. प्लान ऑफ इक्लिप्टिक क्लियर है या दिखाऊं? इधर किताब खोल के देख लो यार एक बार. ओके, सो this is the plane of ecliptic. This whole thing here is the plane of ecliptic. This is the plane of ecliptic. Okay, the plane on which the earth revolves around the sun. Okay, पहला यही स्टेटमेंट थी. Yes, that is the plane of ecliptic. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. And the second statement was, इसमें नहीं आ सकते हैं क्या आप? And the second statement was northern summer solstice. The specific date on which
southern hemisphere is pointed maximally towards the sun. फिर से देखो इस पे, this is the summer solstice June 21. Okay, northern summer solstice. Okay, so this is tilted towards the sun. This northern hemisphere, not southern hemisphere. Southern hemisphere is away from the sun. Northern hemisphere is maximally tilted towards the sun. Okay, so again you have what? क्या था आपका? This was not correctly matched. This is wrong. Okay, axial tilt, the 3.5 degree tilt of the equator from the plane of the ecliptic. From the plane of the ecliptic. इक्वेटर की नहीं है, एक्सिस की भाई, एक्सिस की है, अर्थ की एक्सिस की है. इक्वेटर एक्सियल टिल्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द दिस एक्सियल टिल्ट फ्रॉम द परपेंडिकुलर, उसमें एक वर्ड मिस है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक कर लेना. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक कर लेना, उसमें एक वर्ड मिस है. ठीक है, सो दिस इज द एक्सियल टिल्ट, दिस इज द प्लेन, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इक्लिप्टिक. अगर आप इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक को देखोगे तो दिस एक्सिस इज 23.5 degree tilted away from the plane of perpendicular to the plane of ecliptic. उसको आप axial tilt कहते हो. उसको क्या कहते हो? Axial tilt. Okay, okay. So not equator, not equator. Okay, this is the axial tilt की definition. ऑप्शन सी है? नहीं नहीं, डी, ई है यार, ई है, ई है ना आंसर की पे, ई है, ई है ना. वहां पे मैंने वो ध्यान नहीं दिया. नहीं 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 यार, मैंने क्या कहा, आप मार्क्स की टेंशन मत लो. ठीक है, अगर जिसका सही है, किस किस को ये पता था, ऑनेस्टली बताना, किस किस को लगा था ये है. यूजुअली उसमें भी 4 ही ऑप्शन रहते हैं. ठीक है, दैट्स अंडरस्टूड मिस्टेक, बट डोंट वरी. ठीक है, ABCD ही होता है. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, वो मैंने खुद ऐड किया है. आप इस चीज के बारे में मत घबराओ यार, आप इस चीज को लेके मत इतना परेशान हो जाओ. ठीक है, वन मोर थिंग इज देयर, क्योंकि वन मोर थिंग इज देयर, ये इसको कहीं एडजस्ट करना था, कहीं से स्किप हो गया ये. ठीक है, और मुझे वो MR शीट का याद नहीं रहा. आई थॉट कि आप लोगों के पास दूसरे तरीके से होगा, मुझे MR शीट का बाद में याद आया, ऑनेस्टली बताऊं. लेकिन फिर मैंने चेंज नहीं किया, मैंने कहा चलने दो, कोई बात नहीं, जब हो गया सेट तो होने दो, बिकॉज इट गिव्स यू वन मोर थिंग टू डेवलप ऑन, दैट इज दिस थिंग. ठीक है, सो इसको हम काट के, वी विल कंसिडर दिस एज डी. ये काट के तो इसको डी कर लेते हैं 1 and 4. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. ठीक है, उसमें मैं करेक्शन करवा दूंगा आंसर के, इसमें भी क्वेश्चन पेपर में करेक्शन करवा के तो डाल देंगे. ठीक है, बट इफ यू वांट टू डू दिस थिंग, क्या नहीं ऐसे देखो यार, एक्सक्यूजेस मत बनाओ, आपके मार्क्स काउंट नहीं होने. मुझे पता आपने मैंने गलत किया है, मुझे पता किसी को नहीं पता ये बात. ठीक है, डोंट टेल मी कि सर आपको ऑप्शन की वजह से गलत हुआ. अगर आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है ना, आप मुझे उसी टाइम बोलते हैं कि सर यहाँ पे ये ऑप्शन है, और मैंने भी इस चीज को ओवरलुक कर दिया. ठीक है, ऑनेस्टली बताओ, मैंने ओवरलुक किया है. ठीक है, वो शायद मेरी मिस्टेक भी आप पार्शली मान सकते हो, बट आप लोगों में से किसी को यार पता नहीं थी. ओके, वन मोर थिंग इज देयर. यहीं पे ऐसा हुआ ना, किसी और ऑप्शन में तो नहीं है, एक क्वेश्चन में शायद एक और है ना. कोई बात नहीं, वी विल मेक करेक्शंस देयर. ओके, तो यू प्लीज कट दिस ऑन योर दिस, इसको काट के तो ऑप्शन डी कर लो, 1 and 4 कर लो इसमें क्वेश्चन पे कर लो ना. क्वेश्चन पे आपके पास इस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि उसमें नहीं आएगा. एक डी काटो, 1 and 4 कर दो, काट लो बस. ठीक है, हो गया. सभी कर लो ये करेक्शन. ठीक है, क्योंकि MR में ये ऑप्शन नहीं था, मुझे एक्चुअली मेरी गलती है, मुझे लगा क्या पता ABCD E वाली भी बनाते होंगे. ठीक है, तो दिस इज समथिंग आपको मुझे एक्चुअली इसके ऊपर एडजस्ट करना था, मैं ध्यान नहीं दे पाया, उसकी वजह से हो गया. ठीक है, ओके. सो बाकी एक क्वेश्चन में और है शायद दिक्कत, बाकी में नहीं है, बाकी में 4 ऑप्शन ही काम कर रहे हैं. ठीक है ना, तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग. ओके, दिस इज जस्ट वेरी माइन्यूट मिस्टेक. सो एक्सियल टिल्ट, एक्सियल पैरेललिज्म आपको दिखा देता हूं यहाँ पे. एक्सियल पैरेललिज्म आपको दिखा देता हूं. दिस थिंग यू सी हियर, it is always pointing towards this direction, it always remains the same. Yes, this always remains the same. And this parallelism, this 23.5 degree, that is always the same, that is always away 23.5 degree from the perpendicular to the plane of ecliptic. This particular phenomena is known as axial parallelism.
Okay, at each and every point this axis will always point 23.5 degree away from the perpendicular to the plane of ecliptic. Okay, so that is absolutely क्या था वो क्वेश्चन क्या था? हाँ, yes, this is true. So 1 and 4. So here we will have a small correction. This is your 1 and 4. Okay, so option D is the correct option. अगर उधर देखोगे तो A भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू MR क्योंकि उसमें E का ऑप्शन नहीं है, तो A B C D. ओके ओके, सो परेशान नहीं होना इस चीज में. इन चीजों को तुम लोग नहीं देखो कि सर ये हो रहा है वो हो रहा है, एज इफ यू आर गोइंग टू बी IAS ऑफिसर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेस्ट. ठीक है, इस चीज को मत देखो. ओके, on equinoxes, next question is on equinoxes the sun is directly overhead, that is 90 degree at the equator at the solar noon. True है false है? True है, this is absolutely true. Yes, on equinoxes sun is overhead the equator at solar noon, सुबह नहीं शाम नहीं, but at the solar noon it is at 90 degree. ठीक है, the circle of illumination bisects each parallel of latitude. Yes, this is again true, because on equinoxes each latitude experiences equal day and equal duration of day and night. Yes, so that circle of illumination bisects each parallel of latitude. Okay, okay, अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यूज करना आ गया, वहां से उठा के इधर डाला ना इसको. ठीक है, सो यस, बोथ आर ट्रू एंड सी इज द करेक्ट फिट. ओके ओके ओके, वन मोर थिंग इज देयर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, पहला आपके पास 1 न्यूटन ऑफ फोर्स पर स्क्वायर मीटर इज टर्म्ड एज पास्कल. 1 millibar, this is absolutely true. 1 Newton of force per square meter is termed as Pascal. Yes, this is true. This is true. This is definitely based on the definition of this unit of pressure, atmospheric pressure. तो atmospheric pressure का जो unit है Pascal, तो उसकी definition होती है 1 Newton of force per square meter. Yes, that's absolutely true. Okay. 1 millibar of atmospheric pressure equals 100 Pascal. Yes, this is again true. This is the relation between millibar and Pascals. This is the relation between millibar and Pascals. So this is again true. 1 Pascal equals 1 millibar equals 100 Pascals. You remember this thing. ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट दी है ना, इनको याद रखना. और जहाँ पे यार हिलावत, जहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने डिस्कस किया है ना, वहां पे इन स्टेटमेंट्स को चुपचाप जाके घर पे ऐड कर लेना. समझ आई? इक्विनॉक्सिस पे भी जो स्टेटमेंट यहाँ पे डायरेक्टली दी गई है ना, इनको जाके घर पे चुपचाप ऐड कर लेना. इसको हवा में नहीं छोड़ देना कि अब हो गया टेस्ट खत्म तो बस बात खत्म. जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हुआ है, इफ समथिंग न्यू हैज कम अप, तो उसको चुपचाप घर जाके क्या कर लेना, ऐड कर लेना. ठीक है. यस, यू एट दिस पॉइंट अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एवरेज प्रेशर एट सी लेवल इज 101325 पास्कल और 1013.25 millibar. This is again true. This is again true. Yes, we have discussed this thing, that is the average atmospheric pressure at the sea level is 1013.25 millibar. This is again true. Okay, the top of the atmosphere has a pressure reading of 0 Pascal. Yes, this is again true. As you go higher up, pressure goes on decreasing at a certain point. If you remember this diagram that we discussed, as you go up, it goes like this. So at a certain point in the atmosphere, absolutely this atmospheric pressure will come to 0. Okay, so this is again true. The atmospheric pressure increases with altitude. Yeah, this is definitely false. We have already discussed this thing in class. So the correct fit is B. This is the correct fit. Okay, you could have अगर किसी चीज का पता नहीं था, if you know one this fifth statement की fifth statement wrong है, तो 1 D और C तो ऐसे eliminate हो रहे हैं. ठीक है, 555 सब में है. अगर कोई चीज पता भी नहीं है तो you could have used the elimination here. ठीक है ना? ठीक है. This is how you eliminate the options. ओके, सो लेकिन अब यूपीएससी ऐसा नहीं कर रही है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना. अब थोड़ा सा प्रिसाइज होने की कोशिश करो. ठीक है. एयर मूव्स इन रिलेशन टू, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ एयर मूव्स? एयर रिमेन्स स्टिल बट देयर इज सर्टेन कंडीशन दैट अंडर व्हिच द एयर स्टार्ट्स मूविंग, मतलब मूविंग एयर बिकम्स विंड. ओके, सो प्रेशर imbalance is in vertical direction. Yes, vertical convections, again the pressure imbalance is because of that thing. It is true. It is true. Yes, vertical motion भी होता है एयर का, होता है ना जैसलीन. और क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल मोशन भी होता है. तो वर्टिकल मोशन अगेन इट इज एट्रीब्यूटेड टू दिस
pressure difference, and the horizontal motion, it is also attributed to the pressure difference. So both are true, both are true. Option C is the correct fit. Okay, देखना कुछ लोगों को okay. Coming to the next question, that is, consider the following statements regarding Coriolis effect. Please pay attention, and you please add these points directly at you in your the section in the topic that we have discussed, Coriolis effect. ये चार के चार पॉइंट वहां पे जाके चुपचाप मेंशन कर लेना. These are all fit. The answer is D. The answer is D. I am going to tell you, it is a force caused by differences in Earth's angular velocity about the local vertical. Yes. Okay. Earth angular velocity is maximum at the equator. It is very little at the poles. Okay. So because of सही है. नहीं सर, ये ठीक है. सर थर्ड ऑप्शन. There is no rotation about the local vertical at the equator, so there is no Coriolis effect either. Yes. Again true. The Coriolis effect increases with latitude. Yes, true. Latitude है यार, ऊपर की तरफ जाना है. Latitude के साथ, latitude के साथ ऊपर. तो longitude कहाँ आ गया यार? Latitude के साथ चल रहे हो आप. हम एक लॉन्गिट्यूड थोड़ी मूव कर रहे हैं कि एक ही लॉन्गिट्यूड पे चलना हमें. हम लॉटिट्यूडनली ऊपर की तरफ. यस, इंक्रीजेस विद लैटिट्यूड, इंक्रीजेस विद लैटिट्यूड एज वी मूव टू द नॉर्थ और द साउथ. यस, इट इज ट्रू. उस चीज को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना. आपने मेरिडियन सी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को और उस गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की उसको मिक्स कर रहे हो यहाँ पे, वो नहीं करना है. ठीक है. यस, इट इंक्रीजेस विद लैटिट्यूड. ओके, okay, that's why it is maximum at the pole. The greater the speed of an object produces the increased Coriolis effect. Yes, it is absolutely true. And so options 1, 2, 3 and 4, these are all right. Okay, lekin I want you to write these four options directly under the topic Coriolis force or Coriolis effect that we have discussed in the class. Okay, in the study of atmosphere, the term hydrostatic equilibrium refers to this is something we have discussed in the class. Okay, so this is again the imbalance between vertical pressure gradient force and gravity. The first statement, yes, that is true. और दूसरा था the imbalance between gravity and horizontal pressure gradient force. This is false. This is false. Okay, okay. So only 2 is the correct fit. Option B. Sorry. Only 1. This is the correct fit. This is the correct fit. Option A, 1 only. ठीक है. Okay, coming to the next question, that is question number 16. The term lifting condensation level refers to the level at which air becomes saturated. If you remember the definition of the lifting condensation level, from that you can infer that this is absolutely true. Okay, okay. The level beyond which air no longer cools at unsaturated adiabatic lapse rate but begins cooling at saturated adiabatic lapse rate. Yes, this is again true. Because at lifting condensation level, if you remember, this is the lifting condensation level, air from this to this, it is a unsaturated adiabatic lapse rate. But beyond this, there is saturated adiabatic lapse rate. Okay, so okay, at this particular point, this is the lifting condensation level LCL पे आके it becomes saturated. It becomes saturated. That is dew point is at end, and beyond dew point, if air is moving up because of the release of latent heat. Because of the release of latent heat, it will go up, but that will be under the that will be saturated under the saturated adiabatic lapse rate. Okay, because beyond this, so these are both true. So this is the correct fit, both C and देखो बेटा, यहाँ पे जो मर्जी करो, अब वो सर चेक करेंगे, चेक पेपर मैंने नहीं करना है. मैंने आंसर किया, उनको दे दी है. देखो, अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए. ठीक है. इफ दे आर गोइंग टू बी लीनियंट, आई डोंट नो व्हाट आर देयर प्रिंसिपल्स. मेरा प्रिंसिपल तो कहता है कि यू शुड नॉट बी गिवन मार्क्स. ठीक है. If you are marking these two options, okay, so you will not be given marks. It will be considered as a wrong answer. You will be charged for that. Okay, that is the rule.
Okay, even if one of the answers, even if one of the option, that if you mark two options for the same question, even if one is correct, so other will be considered as that whole question will be considered as wrong, and you will be charged, you will be penalized for that. Okay, so next question is this is the consider the following statements. This is related to the lapse rate. Okay, diabetic lapse rate refers to decline in temperature of still air through the altitude. Is it right or wrong? No, it is wrong. False. Environmental lapse rate gives you the temperature drop through the still air. That is environmental lapse rate. ये बात यहाँ पे diabetic की ये जो diabetic lapse rate refers to decline in temperature of still air through the altitude. So it is false. It is false. Actually, this refers to के बाद वाली statement, it depicts the environmental lapse rate. It does not depict the diabetic lapse rate. Okay, okay. So गलती से भी गलती नहीं करना. ठीक है, हो गई ना अब. Saturated adiabatic lapse rate is more than dry adiabatic lapse rate. Is it true or false? Saturated adiabatic lapse rate is more than dry adiabatic lapse rate. It is false. It is false. Okay, environmental lapse rate for troposphere does not change. It is again false. It changes. It changes from place to place, from day to day. So the correct fit is option D, that is none of the above. They are all false. They are all false. Okay, ठीक है जनाब, आपने मार्क्स ना दिए होंगे अपने, बिना टेंशन के यहीं पे सब कंक्लूड हो गया है. बोल दो सर को कि चेक नहीं करना. Okay, the next question, that is your again match the following. Consider the following. Okay, these are match the following है. पहला है रेडिएशन इन्वर्जेंस. रेडिएशन इन्वर्जेंस, subsidence inversion, feral cell and subtropical high pressure belt. Radiation inversion, if you match it, so what are radiation inversions? They are near surface inversions. They are near surface inversions. Okay, one का क्या आएगा? 3. Subsidence inversion, they are upper air inversions. If you remember the classification that we have done, what was the topic? Temperature inversions. We have discussed the near surface inversions and the upper air inversion. Under the near surface inversion, there was radiation inversion, okay, advection inversion, and one more was there. What was that? बताओ ना यार. टेम्परेचर इन्वर्जन में वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन्स. टेम्परेचर इन्वर्जन्स में आपने डिस्कस किया था, याद है कुछ? वी हैव डिस्कस द टाइप्स. ओके, नियर द सरफेस, अप इन द एयर और अपर एयर. ओके, तो नियर द सरफेस में हमने डिस्कस किया था रेडिएशन इन्वर्जन्स, एडवेक्शन इन्वर्जन्स एंड एयर ड्रेनेज इन्वर्जन्स. ओके, एंड इन अपर एयर इन्वर्जन्स वी डिस्कस्ड subsidence and frontal inversions. So this is based on that directly. What type of is it? What type of the radiation inversion is? What type of temperature inversion is this? This is the radiation inversion. This is a near surface inversion. Okay, subsidence inversion, it is the upper air inversion. Then you have feral cell. Feral cell, okay, it is talking about the origin of the thermal cell. Feral cell, sorry, it is a thermally इनडायरेक्ट सेल. इसमें तो सेल आ गया था, आपको तो पता होना चाहिए था. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज डायनामिक ओरिजिन एंड दिस इज 4. 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4. दिस इज द करेक्ट फिट. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट फिट. ओके, ओके. वेरिएशंस इन लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू. ओके, देयर इज, यू नो, अभी जिस तरह से सर्दियां स्टार्ट हो गई है तो अभी अंधेरा जल्दी हो रहा है ना, ठीक है. सन इज सेटिंग अर्ली एंड सन इज कमिंग अप लेट. सन इज राइजिंग लेट इन द मॉर्निंग. इट इज राइजिंग लेट इन द मॉर्निंग बट इट इज सेटिंग अर्ली इन द इवनिंग. ओके, सो दैट वेरिएशन in daytime and night time from season to season are due to, what is the correct reason? What is the correct fit? B. Correct fit is D. This is the correct fit.
revolution of Earth on a tilted axis. If Earth was rotating, not rotating on a tilted axis, every part of Earth, every place of Earth, that would have experienced equal day and night throughout the year. Okay, Jaslyn? Lekin because of that revolution of Earth on a tilted axis, that because of that tilt in axis, it is experiencing different durations of day and night from season to season. Okay, so the correct answer is revolution of Earth on a tilted axis. Earth's rotation on its axis, it is causing day and night. It is causing day and night. The Earth's revolution around the sun in an elliptical manner, it does not explain the variation in this duration of daytime and night time. It is not explaining that particular thing. Latitudinal position of the place, again it is not explaining that particular thing. Okay, revolution of Earth on a tilted axis, it explains why there is variation. So correct answer is option D. Okay, consider the following statements regarding polar cells. You remember the different cells that were there. We have discussed the tricellular model of atmospheric circulation. So this is the statement regarding polar. This is based on the what is polar cell and what are the statements that are given there. We will see. The first statement is this: the surface circulation in polar cells is from 60° north oblique south latitudes towards the poles. Is it right or wrong? The surface circulation in polar cells is from 60° north oblique south latitude towards the poles. False. It is false. If you remember the polar cell याद है? There were easterlies. That was from the poles towards the 60° north oblique south. It is giving you the statement in reverse. It is telling you the reverse circulation. Okay? Okay. ओके यहाँ पे ध्यान दो नेहा, मन्नत एंड रूवी. The surface circulation in the polar cell, that is from pole towards the 60° north oblique south in the both hemisphere. So this first statement, it is wrong. It is wrong. It is false. Okay. The upper air circulation is easterly in direction. In the polar cells, the upper air circulation is easterly in direction. जाना आपको, ठीक है, जाओ. Okay, upper air circulation is easterly in direction. You tell me, it is false. If you remember, we have discussed the upper air circulation in the low latitude and the polar cells, and then we have separately discussed the upper air circulation in the mid latitudes. Okay, in all the latitudes, at all the latitudes, in all the cells, upper air circulation is largely westerly in direction. So it is telling you easterly in direction. No, it is false. It is false. Polar cells are thermally indirect cells. This is again false. This is again false. So which of the following statements are correct? Option D. This is none of them. सही हो गया? किस किस का सही हुआ? गलत हो गया? क्यों? अब गलती कहाँ हुई? इनडायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट नहीं लिखा है. इनडायरेक्ट की वजह से हुआ. ठीक है, दिस इज थर्मली डायरेक्ट सेल. ओके, द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ पोलर सेल इज लार्जली थर्मल नेचर ऑफ द पोलर सेल. ओके ओके, ठीक है. नेक्स्ट यू सी, वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. व्हाई? आई टोल्ड यू देयर आर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s. या कुछ ऐसा जैसा ना, ऐसा जैसा था ना. Southern hemisphere has less land mass. What is the reason for that particular thing? I am telling you, I have been telling you time and again, the land water differential in northern hemisphere and the southern hemisphere, that is responsible for a large number of things, and one of the things that is there, southern hemisphere has less land mass as compared to the northern hemisphere. This is true. This is true. This is the reason. But let us see what is the next statement given here. Coriolis force is higher in southern hemisphere as compared to northern hemisphere. False. ऐसा कुछ नहीं, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि कोरालिस फोर्स चेंजेस फ्रॉम हेमिस्फीयर टू हेमिस्फीयर. चेंज करती है हेमिस्फीयर से हेमिस्फीयर में कोरालिस फोर्स. नो. सो ओनली वन इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, which one of the following weather conditions is indicated by a sudden fall in barometer reading? It is telling you temperature is dropping. It is telling you, sorry, pressure is dropping. इसका मतलब है pressure is dropping. प्रेशर ड्रॉप कर रहा है. व्हाट इज गोइंग टू बी व्हाट इज गोइंग टू हैपन?
stormy weather. This is the correct fit. All other are no. Hot and sunny weather, no. You can't be sure कि hot and sunny weather है कैसा है. You can't be sure. Cold and dry weather, again you can't be sure. Cold dry कैसा है कुछ पता नहीं है. Calm weather है ये भी नहीं पता. But अगर pressure drop हो रहा है तो that pressure will be filled up by the surrounding air. So it is going to be stormy weather. It is going to be stormy weather, and maybe there may be precipitation as well. Okay, there may be precipitation as well, but Baki B, C, D they does not explain the following reading. So stormy weather is the correct fit. ठीक है. Okay. Cloudy nights are warmer compared to clear like cloudless nights because clouds. What happens on cloudy nights? I have discussed this concept in class. Okay. What happens on cloudy nights? Prevent cold waves from the sky from descending on earth. True or false? False. This is false. कहाँ से cold waves आएंगे यार sky से? ठीक है. Reflect back the heat given off by earth. This is true. Produce heat and radiate it towards earth. Cold produce करेंगे क्या? Heat कहाँ से cold produce करनी और फिर नीचे की तरफ भेजनी है? ठीक है. This is false. Absorbs heat from atmosphere and send it towards earth. So option B is the correct fit. Okay. Okay. The term team नहीं है, term है ये अभी ये देखना यार, छोटी छोटी चीजें गलत हो जाती है. The term doldrum refers to a zone of high pressure in the subtropical high pressure belt, the east flowing wind in the equatorial region, a small belt with little or no surface winds extending approximately 5 degrees north and south of the equator. The fast moving winds westerlies in the mid latitude regions. What is doldrum? Doldrum is that particular region in the this tropical zone where there are very light winds. Okay. Very light winds or no winds at all, and they extend from that particular zone, extend from 5 degrees north to 5 degrees south of the equator. So option C is the correct fit. Option C is the correct fit. Okay. Come to the next question, that is the consider the following pairs. Anabatic wind. Anabatic wind. What are these anabatic winds? If you remember the periodic winds, we have discussed periodic winds, non-periodic winds. Okay. Under that we have discussed mountain and valley breeze under the periodic winds, and one more thing that we have discussed under the उधर नहीं यार, आगे देखो, मैं आगे खड़ा हूं ना, सुनने से बात नहीं होगी बेटा, आगे देखना पड़ेगा आपको. One more thing we have discussed under the periodic winds in the this mountain breeze and valley breeze and sea breeze and land breeze. These were the two types of periodic winds that we have discussed. And one more thing, under non-periodic winds we have discussed so many things. Non-periodic winds हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, like cold winds, hot winds, all these things. Chinook, Foehn, Zonda, Blizzard, Santa ना, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी. ठीक है. ओके. आया पेपर में ना, डाला क्वेश्चन तो आपने क्या बहुत सारे डालने चाहिए थे. Anabatic wind. Okay, this is the daytime valley breeze flowing upslope the mountains. बताओ एनाबैटिक सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ ये? Second, Yamo, a downslope compressional wind in Japan. True, yes. This is true. This is again true. क्यों? देखते हैं. Santana, hot and dry wind blowing in west-east direction, California Valley. False. East to west है बेटा, east to west है, west to east नहीं है. East to west direction. देखना Santana क्या है. Sirocco, warm, dry, dusty wind which blows from Sahara towards Guinea coast of Africa. This is false. This is Harmattan. Sirocco moves north of the Sahara Desert and it reaches the southern coast of Europe, Italy, Spain, these regions. That is what? That is Sirocco. लेकिन यहाँ पे क्या है? Warm, dry, dusty wind which blows from Sahara towards Guinea coast. जो यहाँ पे दिया है, it is talking about Harmattan. तो Sirocco थोड़ी है वो. Sirocco है क्या? नहीं है ना? तो Santana, hot and dry wind blowing in west-east direction, California Valley. No, it blows from east to west in the California Valley. Yes, it is hot and dry wind, but it blows from east to west, not west to east. If you look at your notes, you will see it there. Okay. Yamo, yes, it is a downslope compressional wind in Japan.
Anabatic wind, yes, that is the daytime valley breeze flowing upslope the mountains. And the katabatic दूसरा है ना इसमें, katabatic wind is the mountain breeze that flows at night from the mountains towards the valley floor. Okay, so these two are correctly matched, these two are not, so your option is 3 and 4. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, okay, ठीक है. ओके कोई गलत, कुछ गलत हो गया क्या? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. इट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स पर नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स कंटेन्ड इन अ क्यूबिक मीटर ऑफ एयर. इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विद एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ एयर. यू टेल मी व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. It is the density of water vapor in a given volume of air. It is the mass of water vapor in a given volume of air. Okay, absolute humidity की ये definition है. Specific humidity mass per given mass. Okay, relative humidity what can be maximum and what is there. Okay, what is this mass mixing ratio? Mass mixing ratio is again related to the mass, but the given mass of water vapor in the given mass of dry air. और specific humidity में both in both the cases, both the numerator and the denominator mass is taken, but mass of wet air is considered. उसमें dry air का mass considered नहीं किया जाता. Absolute humidity में we consider the density there. What is density of that is expressed in gram per centimeter cube or gram per meter cube, whatever the units. So it is density of water droplets expressed as the number of grams of water droplets contained in cubic meter of air. क्या है बताओ, सही है गलत है? पहला सही है गलत है? absolute humidity का गलत है. Its value does not change with expansion or contraction of air. गलत है सही है? बोलो यार. Its value changes with expansion or contraction of air. Why? यहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स है बेटा, वाटर वेपर नहीं है. वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर वेपर में फर्क है. वाटर वेपर और वाटर ड्रॉपलेट में फर्क है. वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म एंड ह्यूमिडिटी इज कंसिडर्ड water in the gaseous form, not in the liquid form. Okay, so both are wrong. Neither one nor two is the correct answer. हाँ ठीक है. Which of the following are not forms of precipitation? The question is not forms of precipitation. We have discussed the forms of precipitation. Okay, flurries, these are forms of precipitation. Zonda, this is not a form of precipitation. Sleet, Varga, frontal rain. Okay, this is the type of precipitation. So are not form of precipitation. 2 and 5. Option A is the correct fit. Okay, ये तो easy था. The term torrid zone refers to the area of the earth between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Yes, this is true. This is the correct fit. Okay, the high pressure region over the poles. No. The torrid zone, temperate zone and the frigid zone. This is the other classification that is used. This is the other naming that is used for this tropical zone, temperate zone and the polar zone. Okay, so torrid zone refers to the tropical zone that is there between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn in both hemispheres. That is the torrid zone. Okay, so there is nothing to worry about. So option A is the correct fit in the question number 28. Okay, okay. Now coming to the question number 29. Consider the following statements with respect to June solstice. Solar declination is 23.5 degree north. क्या? Yes, true. On June solstice, on June solstice, solar declination is 23.5 degree north. Okay, ठीक है. Northern hemisphere की बात हो रही है. ठीक है. Every latitude in the northern hemisphere receives more energy than the corresponding latitude in the southern hemisphere. Yes, again true, because we are talking about the summer solstice in the northern hemisphere. Okay, okay. June solstice उसी को कहते हैं. ठीक है. Every place north of Arctic Circle and receives 24 hours of daylight, and every place south of Antarctic Circle has 24 hours of darkness. This is again true, because beyond Arctic Circle there will be 24 hours of daylight on this particular June solstice. Okay, but beyond the Antarctic Circle in the southern hemisphere there will be complete darkness. There will be 24 hours of
darkness. Okay, okay. So the equator receives 12 hours of daylight. Yes, it receives 12 hours of daylight. Yes, the equator receives 12 hours of daylight. कोई बात नहीं. The equator receives 12 hours of daylight. Yes, the equator on summer solstice also receives the 12 hours of daylight. Okay, ये लिख लेना कर जाके जून solstice में. इक्विनॉक्स पे भी होता है. इक्वल डे नाइट, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट. इक्वेटोरियल जोन, इक्वेटोरियल रीजन में फिर विंटर सॉलिस्टिस में भी ऐसा ही होता है. इक्वेटोरियल रीजन ऑलवेज थ्रू आउट द ईयर इट नियरली एक्सपीरियंसेस इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर. इक्वेटोरियल रीजन. ओके, ओके, ओके. आई वांट यू गाइस टू ऐड दिस थिंग देयर इन द जून सॉलिस्टिस. 2 बना देना. एंड अगर जून सॉलिस्टिस में ऐसा हो रहा है तो दिसंबर सॉलिस्टिस में इसका उल्टा हो जाएगा. जहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लिखा है वहां पे सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा. देखो दिसंबर सॉलिस्टिस में पहले डिस्कस कर लेते हैं. फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज अ होल सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू लेस एटमॉस्फेयर देन इट डज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. यस, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू. ओके, बिकॉज इट इज इन द इट इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the northern hemisphere, the solar rays have to travel the lesser distance for the northern hemisphere as a whole. Okay, so yes, 1 2 3 4 and 5, these are all correct. Option D is the correct fit. Okay, I want you guys to take note of this thing. June solstice लिख लेना है, and under June solstice you have to mention all these things. Okay, and the same applies for this December solstice, but solar declination on December solstice it is 23.5 degree south. दिसंबर solstice की बात हो रही है. ओके, और फिर आपका यहाँ पे नॉर्दर्न है, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है तो इट रिसीव्स 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस एंड अंटार्कटिक सर्कल, बियॉन्ड अंटार्कटिक सर्कल 24 आवर्स ऑफ डे लाइट. दिसंबर solstice के बारे में बता रहा हूँ. ठीक है, तो फिर अगेन इक्वेटर विल रिसीव 12 आवर्स अ डे. यस, इट विल बी ट्रू देयर आल्सो. And this for the northern hemisphere की जगह for the southern hemisphere sunlight travels lesser distance as compared to the southern hemisphere. बस interchange कर लेना है. Okay, remember this thing. So this for question number 29 you have this option D is the correct fit. ठीक है. The standard time of following countries is ahead or behind the Greenwich mean time depending on whether they are east or west of the longitude passing through Greenwich. The first one is Cuba, second is Greece, third is Japan, fourth is India, fifth is Iraq, and sixth is Costa Rica. Okay, if you remember when we discussed this time zoning when we discussed, so we were discussing the time with respect to the Greenwich mean time. Okay, towards the east of the Greenwich, they are time is ahead. Okay, this is the 0 degree what? ये आपका प्राइम मेरिडियन है. ठीक है, एंड दिस इज द टाइम इज बिहाइंड टुवर्ड्स द वेस्ट. ओके, ओके. Each 15 degree of latitude experience 1 hour ahead or 1 hour behind. मतलब 1 degree of longitude is either 4 minutes ahead or 4 minutes beyond the this Greenwich mean time. Okay, so if you see what is the easternmost country here, that is Japan. Okay, after Japan who is next? India is next. ठीक है, and then you have Iraq, they are all ahead, and then you have Greece. This is also ahead of the Greenwich mean time. And behind कौन सी हैं? Cuba, but Costa Rica will be first, and then there will be Cuba. Cuba is a Central American country, and this Costa Rica is a Caribbean country. Cuba is the Central American country. सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? देखो जरा मैप पे ऑप्शन क्या है? सी. सी 6 1 नहीं 6. Costa Rica is there. Okay, sorry. Costa Rica is
Costa Rica is the last. This is the Central American country. Okay, sorry. This is Central American country and this Cuba is the Caribbean country. Okay, Costa Rica उस तरह टिप पे है. नॉर्थ अमेरिका के साथ क्या कर रहा है यार? तो क्यूबा यार कैरेबियन कंट्री है ना. साउथ अमेरिका का 36. Which one of the following sequential order gives the correct arrangement of countries according to their standard time from ahead to behind GMT? 3, 4, 5, 6. Yes, Costa Rica is the Central American country और आपका क्यूबा इज द कैरेबियन कंट्री. क्यूबा यार इसमें कैरेबियन रीजन में है. कोस्टा रिका आप टिप पे देखो ना. सेंट्रल अमेरिका का मैप देखना जरा. देखो आप इधर सेंट्रल अमेरिका यहाँ पे है ना आपका. दिस इज कोस्टा रिका. कोस्टा रिका का यहाँ पे इस टिप पे है. देखना यहाँ पे है कोस्टा रिका. दिख रही है ना. कोस्टा रिका तो है ये है ना. मैं नहीं कोस्टा रिका की बात कर रहा हूँ. कोस्टा रिका तो यहाँ पे है ना आपका. यहाँ पे कोस्टा रिका आपका जो आपकी वो एक्सटेंशन है नॉर्थ अमेरिका की साउथ अमेरिका की तरफ. वहां पे आपका कोस्टा रिका. कोस्टा रिका इज हियर. कोस्टा रिका के नीचे पनामा है ना यार. ये कौन राकेश परेशान कर रहा है. कोस्टा रिका इज हियर एंड दिस इज पनामा एंड दिस क्यूबा इज हियर. क्यूबा इज द कैरेबियन कंट्री. क्यूबा इज द कैरेबियन कंट्री. ओके, कोस्टा रिका इज द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री. ओके, सो दिस इज फ्रॉम अहेड टू बिहाइंड जीएमटी आपने सीक्वेंस करनी थी. तो फ्रॉम अहेड कौन है? सबसे पहले कौन है? जापान. ठीक है. देन यू हैव दिस इंडिया. ओके, 4. Then you have Iraq. Iraq is the 5th in number here. Okay. Then you have 2. 2 is Greece. Then you have 1 that is Cuba. Caribbean country है, पहले आएगी. ठीक है. तो सबसे बैक सबसे बिहाइंड जो टाइम में होगी ग्रीनविच से दैट विल बी दिस कोस्टा रिका. कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिकन कंट्री. तो दैट्स द करेक्ट फिट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट फिट. ओके, आपको जो सीक्वेंस थी, सीक्वेंस आपको कैसे मार्क करनी थी? सीक्वेंस आपको मार्क करनी थी दिस सीक्वेंस. यू हैव टू मार्क दिस सीक्वेंस फ्रॉम अहेड टू बिहाइंड. रिमेंबर दिस. अहेड टू बिहाइंड पूछा इसने. अहेड टू बिहाइंड टू अहेड नहीं पूछा. अगर बिहाइंड टू अहेड पूछता फिर उल्टा हो जाता. ठीक है, लेकिन अहेड टू बिहाइंड पूछा तो अहेड मतलब सबसे पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, और फिर लास्ट में कोस्ट हम ग्रीनविच से जाएंगे तो सबसे पीछे टाइम किसका आएगा. सो दिस इज द करेक्ट फिट. कितने मार्क्स बन रहे हैं? कुछ आइडिया?